create content. Bye.
So what's up guys? Hi, welcome back to the stream. I hope everyone is okay, right? This is the first stream guys of the channel. So I hope that everyone is doing literally fine. ठीक है? Let me just quickly check one two things. Okay, voice is coming fine and video is coming fine as well. Hi Suraj, hi Janaya, hi Snigdha, joined. Thank you so much guys for being here, for supporting me. Thank you so much. So guys, this will be the client security hash project जो कि academy का project है RE framework के ऊपर. So I thought that this I think do a little bit of different. ठीक है, तो हम इसको live करने वाले हैं यहाँ पे. Obviously this is a long project, तो एक ही live में मैं नहीं बताऊंगा पूरा project because फिर वो देखने के लिए बहुत tedious हो जाता है, right? So we'll be bifurcating this video in parts. ठीक है, चलिए. तो भाई विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स क्विकली गो ओवर देयर. चलिए, ओके. यस, सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द एकेडमी गाइज. ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट दे रखा है क्लाइंट सिक्योरिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर वर्किंग. यू कैन से दैट आपका जो फर्स्ट रेज्यूमे अगर आप फ्रेशर हो तो दिस है, यू हैव टू डेफिनेटली इंक्लूड इनसाइड ऑफ योर रेज्यूमे. दिस इज द क्लाइंट सिक्योरिटी हैश PDD. तो हम PDD के अकॉर्डिंग चलेंगे. वी विल बी डिजाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द PDD एज वेल. ठीक है, चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है इस PDD में. आई ऑलरेडी डाउनलोडेड द PDD ओवर हेयर. MYST कह रहे हैं हाय MSYT. सूरज चौहान, हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग लाइव. इट्स ओके सूरज, नो इश्यूज ब्रदर, ये तो होना ही था एक दिन. ठीक है, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल गाइज. थैंक यू सो मच. ओके, सो दिस इज द PDD ऑफ द क्लाइंट सिक्योरिटी हैश. ठीक है, लेट्स क्विकली सी दैट हमें क्या करना है इस पूरे प्रोजेक्ट में. ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एज इस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं. Process name is client security hash. This is the function of security. Department is finance and accounting. It is what it is generally doing. Let's see. Generate the security hash for each client based on their personal information. Means we have to generate a security hash with the help of client based data. इनके personal information के regarding हमें एक security hash यहाँ पे generate करना है. ठीक है, and daily ये run होगा. ठीक है, और 7 to 15 clients इसमें यूज़ होंगे. एवरेज हैंडलिंग टाइम इज 2 मिनट पर क्लाइंट. जो क्लाइंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट लगना चाहिए एवरेज हैंडलिंग टाइम, वो हाँ बता रहा है. ठीक है, ओके. लेट्स क्विकली सी व्हाट इज द हाई लेवल डिजाइन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ओवर है अकॉर्डिंग टू द PDD, राइट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन इनटू द एक्मे सिस्टम 1 एप्लीकेशन. मैं आपको ये पूरा एक बार एक करके दिखाऊंगा पूरा स्टेप. ठीक है, वेल एज इस प्रोसेस वील बी डूइंग मैनुअली फर्स्ट 1 ट्रांजैक्शन, ताकि आपको समझ में आए कैसे होगा ये प्रोजेक्ट. वेरी क्रिटिकल प्रोजेक्ट गाइज. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस प्रोजेक्ट इनसाइड योर रेज्यूमेज एज वेल. ठीक है, चलिए. एक्सेस द वर्ड लिस्टिंग आइटम ऑन द डैशबोर्ड. वी हैव टू एक्सेस द वर्ड लिस्टिंग आइटम ऑन डैशबोर्ड. वी हैव टू सेलेक्ट द WI5. नॉट WI5 ओवर हेयर इज वर्क आइटम्स लेवल 5. ठीक है, उसके अंदर जाके मुझे क्लाइंट की डिटेल्स सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है हैश जनरेटर. वी हैव टू ओपन द हैश जनरेटर एज वेल. यहाँ पे इन्होंने URL दे रखा है हैश जनरेटर के, जो कि नीचे भी मिलेगा हमें. ठीक है, वी हैव टू रिट्रीव द क्लाइंट सिक्योरिटी हैश फ्रॉम द वेबसाइट, गो बैक टू द वर्क आइटम डिटेल्स एंड अपडेट द वर्क आइटम. वहाँ वो हैश पेस्ट करना है. वी हैव टू ऑल्सो अपडेट द वर्क आइटम्स एंड यहाँ पे स्टेटस भी हमें कंप्लीट रखना है. ठीक है, ओके, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ इट. तो ये आपका एक फ्लो डायग्राम था. दिस इज ए फ्लो डायग्राम गाइज. तो वील बी नाउ सीइंग द डिस्क्रिप्शन. अगेन इट इज लिटरली द सेम. Okay, I'll quickly see कुछ messages. Okay, the same over here. Okay, no issue. Guys, latency बहुत कम रखी है मेरे लाइव स्ट्रीम की, तो जो यहाँ पे दिखेगा वो मुझे तुरंत आपको यहाँ पे, मतलब जो इट इज़ वेरी लो लेटेंसी ओवर देयर, वेरी लो MS ओवर देयर, राइट. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन इनसाइड द एक्मे सिस्टम 1 वेबसाइट ओवर है लाइक दिस. ठीक है, इसको हम लॉग इन करते हैं. I'll log in with a different URL. Okay, I'll just copy this, paste it. Acme system 1, we should be having this. Okay, no issues. Okay, so यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से. Okay, this we are doing manually, but this bot have to do or robot have to do. Now this part was that we have to select the work items over here, right.
ये आपका है, यस वी हैव टू सेलेक्ट द वर्क आइटम्स, ओके। सो हम यहाँ पे जाएंगे, विल क्लिक ऑन द वर्क आइटम्स एज वेल, ठीक है, विच विल बी ओपनिंग अ सॉर्ट ऑफ टेबल टाइप का टेबल आपका यहाँ पे डेटा खुलेगा, ठीक है, ओके। सो ओवर देयर वी हैव टू ओनली एंड ओनली सेलेक्ट WI5। नो देखिए, इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। वी कैन ऑल्सो यूज फिल्टर डेटा टेबल, वी कैन ऑल्सो यूज लिंक एज वेल। तो हम इसको दोनों से आपको बताएंगे, ठीक है। विल ऑल्सो बी एम्फेसाइजिंग ऑन लिंक बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो रिक्रूटर्स चाहते हैं कि भाई वो लिंक यूज़ करके बनाएं जो भी है, तो वील बी यूजिंग लिंक मोर इन दिस प्रोजेक्ट। तो आफ्टर दिस स्पेसिफिक आइटम हैज़ बिन फिल्टर्ड, वी हैव टू क्लिक ओवर हेयर इनसाइड दिस होरग्लास बटन, ठीक है। एंड यहाँ से हमें डिटेल्स लेनी है, BA9220, ये क्लाइंट नेम एंड कंट्री, लाइक दिस, राइट। एंड इसको हमें एक फॉर्मेट में रखना है लाइक दिस, ठीक है। इसको हम रखेंगे ऐसे BA लाइक दिस, ठीक है। दिस इज जस्ट द हाई लेवल ऑफ द प्रोसेस गाइस, नॉट द क्लाइंट नेम, ओके। एंड दिस विल बी द नेम ऑफ द क्लाइंट like this and France will be like this, ठीक है। तो इसके विदाउट स्पेसेस, हाँ मेरे को स्पेस नहीं रखना है, वी डोंट हैव टू कीप एनी स्पेसेस। इसके बीच में स्पेस चलेगा, ये क्लाइंट नेम है, बट नॉट बिटवीन दीज हाइफन्स ऊपर थे, राइट, ओके। सो ये आपको करना है जब हम हैश वेबसाइट में डालेंगे इसको। आई ऑल्सो क्विकली सी दिस दे हैव यूज, राइट, हैश sh1 tools, ओके, लेट्स सी। अच्छा, वेयर वॉज इट, लाइक दिस। तो ये मैं यहाँ पे डालूंगा, कॉपी दिस, पेस्ट इट है, तो यू कैन सी दैट वी हैव जनरेटेड अ सक्सेसफुल हैश ओवर देयर। यहाँ पे हमने एक, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ढंग से, हाँ। तो यू कैन सी दैट वी हैव जनरेटेड अ हैश ओवर हेयर। ए हैश कॉपी मुझे करना है, आई जस्ट कॉपी दिस हैश एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट वर्क आइटम। आई क्लिक ओवर हेयर, ठीक है। आई ऐड ए कमेंट्स, कमेंट से मुझे ये रखना है स्टेटस विल बी कंप्लीट एंड आई हैव टू प्रेस द अपडेट वर्क आइटम लाइक दिस, ठीक है। एंड देन दिस इज वन ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली वी हैव टू सेलेक्ट ऑल दोज वर्क आइटम्स, 5 आइटम ओवर है, जितने भी वर्क आइटम 5 हैं उसको मुझे यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है, उसके अंदर ही ये मुझे ऑपरेशन करना है, बिकॉज यू कैन सी दैट वी हैव कैलकुलेट क्लाइंट सिक्योरिटी हैश ओवर देयर इनसाइड द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ये नहीं करना, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग इट, ठीक है। जो भी REFramework के प्रोजेक्ट्स होंगे हम उसे लाइव यहाँ पे करेंगे आपके सामने। एंड ऑब्वियसली विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर परफॉर्मर मॉडल और आर्किटेक्चर, यू गाइस कैन से, बिकॉज विल बी यूजिंग क्यूज, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों पार्ट कवर होंगे। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो। हम इसमें एक्सेल भी यूज़ करेंगे इनसाइड REFramework, इसमें हम यूज़ करेंगे आपका क्यूज भी इनसाइड REFramework। तो दिस विल बी अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। अब उसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड द UiPath। चलिए, अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ लॉग आउट, बिकॉज वी हैव टू ऑलवेज क्रिएट अ लाइब्रेरी और क्रिएट समथिंग लॉग इन सीक्वेंस फॉर दिस। तो दिस विल बी अवर स्टार्टिंग पेज, ठीक है। चलिए, तो ओके, विल बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने आपको एक करके बता दिया है पूरा, ठीक है। ये सब कुछ हमने कर दिया है मैनुअली अभी। अब हम बनाएंगे रोबोट, राइट, ओके। चलिए, ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू द स्टूडियो एंड से अ न्यू प्रोसेस इनसाइड द REFramework ऑब्वियसली। सो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ REF, रोबोटिक इंटरप्राइज फ्रेमवर्क -CSH, दैट मीन क्लाइंट सिक्योरिटी हैश, that is the client security hash over here, right? And I'll say dispatcher, ठीक है। ये मैं dispatcher रख रहा हूँ बिकॉज मुझे इससे क्यूज में डेटा ऐड करना है। आई हैव टू ऐड सम डेटा इनसाइड द क्यूज विद दिस डिस्पैचर, ठीक है। दिस इज नॉट द परफॉर्मर, दिस इज द डिस्पैचर। सो आई विल बी यूजिंग REFramework client security hash dispatcher, ठीक है। I'll quickly create it, okay। I hope guys सबको समझ में आया, everybody is being understood जो मैं अभी तक बताया। इफ़ कोई डाउट है आपका, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, अभी तक जहाँ समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, जनरल डाउट, सो विल बी कीपिंग अलग से एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें प्लीज़ सब डाउट्स पूछ लेना अपने एक साथ, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, ये है, लेट्स क्विकली सी डू वी हैव एनी अपडेट्स ऑन अवर डिपेंडेंसी। तो इसको हम स्क्रैच से कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओवर हेयर एज स्क्रैच, ठीक है। कुछ भी ये नहीं कि मैंने यहाँ पहले से बना के रखा है मैं उसमें अपडेट करूँ, नहीं, आपके सामने सब कुछ, दैट्स व्हाई इट्स लाइव, राइट। तो वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर हेयर अपडेट्स, ठीक है। दिस इज REFramework गाइस, एज यू नो। तो विल बी फर्स्ट
टेलरिंग अवर आरई फ्रेमवर्क टू यूज विद द डेटा रो, ठीक है, डेटा रो के साथ हमें इसे यूज़ करना है, बिकॉज चलिए उसको हम बाद में करते हैं, वाई, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो टेबल आया था AWI है, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड, वी विल बी फिल्टरिंग इट, एंड एक एक आइटम आपका ऐड होगा इनसाइड द क्यूज, राइट. सो वी विल बी यूजिंग द डिस्पैचर एंड द परफॉर्मर मॉडल विद दिस सिनेरियो, ठीक है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिस्पैचर में ही मुझे लॉगिन लगेगा, परफॉर्मर में भी मुझे लॉगिन लगेगा, तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू क्विकली क्रिएट अ लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी हम बना लेते हैं यहाँ पे. आई एम नॉट यूजिंग द ऑब्जेक्ट रैपर ओवर हेयर, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरी एक लाइब्रेरी बना के वहाँ पे रख दूँ, और वी कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी ऑल्सो ओवर हेयर गाइस, ठीक है. दोनों हम यूज़ कर सकते हैं. लाइब्रेरी विल बी हैविंग मोर एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम द यूआई एलिमेंट्स ओवर है, इसमें खाली यूआई एलिमेंट्स ही हम यूज़ कर सकते हैं. अभी के लिए वी आर क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी, ठीक है. इनसाइड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रैपर, ताकि आपको दोनों का फंडा समझ में आ जाए यहाँ पे, ठीक है. आई जस्ट गो ओवर हेयर लाइब्रेरी एंड आई से एक्मे सिस्टम 1 लॉगिन लाइब्रेरी, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ में पेस्ट करता हूँ, बिकॉज द नेम इट इज़ ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. क्रिएटेड, ठीक है. चलिए, सो इनसाइड द न्यू एक्टिविटी लेट्स क्विकली रीनेम इट. आई से एक्मे सिस्टम 1 लॉगिन. आई एम राइटिंग सिस्टम 1 गाइज, बिकॉज आगे सिस्टम 3 भी है हमारे पास यूज़ करने के लिए. सो विल बी डूइंग ऑल द प्रोजेक्ट्स मैंशनड इनसाइड द एक्मे सिस्टम. जितने भी एक्मे के प्रोजेक्ट्स हम सब करेंगे यहाँ पे लाइव. थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके कंसेप्ट क्या हैं यहाँ पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. लेट्स सी. ओके, चलिए. तो इनसाइड द जैमल फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, वी सी देखिए हम एसेट्स वगैरह यूज़ करेंगे इनसाइड द आरई फ्रेमवर्क ओनली, ठीक है. तो विल बी फर्स्ट यूजिंग अ यूज एप्लीकेशन और ब्राउजर एक्टिविटी ओवर हियर, राइट. वन मोर थिंग गाइस, न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे आपको ऑटोमेशन एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो यू हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल इट. डोंट पैनिक कि भाई मेरे पास ऑटोमेशन एक्टिविटी नहीं है, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इट इज़ देयर इनसाइड द मैनेज पैकेजेस, जस्ट गो इंस्टॉल देम एंड यू गुड टू गो, ठीक है. चलिए, तो ये है एक्मे सिस्टम 1. सो आई विल जस्ट गो ओवर देयर एंड सेलेक्ट इट. ऑटोमेटिकली इट हैज़ टेकन इट, ठीक है. एंड यहाँ पे आई विल राइट टाइप इनटू विद द मॉडर्न डिज़ाइन का इट्स वेरी ईज ऑफ यूज़. पहले से क्या होता था कि भाई हमें सेलेक्टर्स भी चेंज करने हैं, चेक करने हैं, इट इज़ ऑटोमेटिकली टेकिंग दैट फजी सेलेक्टर. कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं हो पाता है, बट ठीक है, इट्स मोर और लेस द सेम पार्ट, ठीक है. चलिए, एंड टाइप इनटू अगेन फॉर द पासवर्ड, ठीक है. एंड वील बी ऑल्सो फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर हेयर जो इस प्रोजेक्ट में लगेंगे आपको. विल बी यूजिंग द बेस्ट. अभी इसको पॉपुलेट करते हैं, डोंट वरी, ठीक है. क्लिक, ठीक है. तो ये है मेरा लॉगिन पार्ट ओवर हियर एंड आई विल जस्ट से ओके, राइट. अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है. व्हाट 2 ऑप्शन? आप या तो यहाँ पे ही अपना एसेट रख सकते हो, ठीक है, या तो आप अपने फ्रेमवर्क में जो आप एसेट लोगे क्रेडेंशियल का वो आप यहाँ पे रख सकते हो. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग द एसेट इन द फ्रेमवर्क ओनली. यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके फ्रेमवर्क में एसेट है वो यहाँ पे दे रहा हूँ. तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इन दिस पार्ट, हम यहाँ पे एक आर्गूमेंट दे सकते हैं. वी कैन गिव एन आर्गूमेंट, वी कैन गिव अस इन, मैंने कंट्रोल M दबाया बाय द वे, आई हैव प्रेस कंट्रोल M गाइज फॉर दिस. इन अंडरस्कोर str अंडरस्कोर यूज़र नेम, ठीक है. ये आपका आएगा यहाँ पे, यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा जब हम लाइब्रेरी को पब्लिश करेंगे इनसाइड ऑफ द ऑर्केस्ट्रेटर टेनेंट फीड पे जाके, तो ये वहाँ पे शो करेगा विद द हेल्प ऑफ एन आर्गूमेंट, ठीक है. इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पॉपुलेट कर सकते हैं, राइट. ओवर देयर आई विल से कंट्रोल M अगेन. I'll say inside the secure part first I'll say in underscore sec means secure string. ये string है, यहाँ पे हम नहीं डालेंगे because of the security reasons. आप लोग मत डालेगा, obviously client के जितने भी credentials होते हैं it should be stored inside an asset inside the orchestrator. वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है. str underscore password. In means
आपका इनपुट आर्गूमेंट है. SEC मीन्स दिस इज अ सिक्योर स्ट्रिंग, सिक्योर, एंड STR मीन्स स्ट्रिंग, पासवर्ड इज द नेम ऑफ द आर्गूमेंट ओवर हेयर. ठीक है, ये पार्ट मेरा डन है. एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू, जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस वी विल बी यूजिंग गेट क्रेड ओवर हेयर. ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस गाइज, क्योंकि ये हमें वहाँ यूज़ करना है इनसाइड द फ्रेमवर्क. must be having, yeah, we am having the creds, properties, str in, okay, in underscore str username. देखिए अब ड्यू टू इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो गई है इसमें, तो इट इज़ ऑलरेडी सजेस्टिंग दैट स्पेसिफिक नेम. पहले ऐसा नहीं होता था. ठीक है, जस्ट टैप एंड इट विल बी देयर. अगर आपने नहीं बनाई, इफ यू नॉट क्रिएटेड एनी आर्गुमेंट एज वेल, इट विल ऑल्सो बी सजेस्टिंग अ रैंडम नेम फॉर यू गाइज ओवर हेयर. राइट, सो दिस इज द वे टू डू नाउ. ओके, ये है जस्ट फॉर चेकिंग. पर देखिए वेन एवर यू आर वर्किंग विद आरी फ्रेमवर्क, डोंट पैनिक कि यार ये इतना बड़ा फ्रेमवर्क है, मैं इसमें कहाँ इंसर्ट करूँ डेटा, कहाँ पे क्या डालूँ. नो, जस्ट क्रिएट अ होल रन फॉर वन ट्रांजैक्शन इन योर ओन XAMLs. At the later part, just invoke them inside the respective states. That is the way to do with the RE framework. अगर आप स्टार्टिंग से ही उसमें डालने लगोगे, इनिशियलाइजेशन स्टेट में आप ये करता हूँ, पहले एक पूरा रन बना लो आप, एंड देन जस्ट इन्वोक लिटिल एटॉमिक XAMLs, छोटे छोटे XAMLs बना लो ताकि आपको रीयूज़ कर सको. ठीक है, मेन पार्ट इज टू रीयूज़ दोज XAMLs ओवर देयर. अभी हम रीयूज़ करेंगे यहाँ पे, तो विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलिए, अच्छा ये हो गया है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टाइप इट अगेन. ओके, एंड दिस पार्ट आई विल बी यूजिंग अ वैलिडेशन कि भाई मेरा लॉगिन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, होना है कि नहीं हुआ है लॉगिन. तो फॉर दैट पार्ट what I am doing, okay, what I'll be doing for this part, I'll be just simply using a check app state activity, ठीक है, over here, and indicate on the screen. I can either go for my email or either go for dashboard. क्योंकि देखिए dashboard is pretty much constant in this site. So always on the dashboard, on the main page, when you have logged in, obviously dashboard is coming always. ठीक है, तो वहाँ पे whenever it is coming, तो you can just mention dashboard and it will be checking whether dashboard has appeared or not. If it has appeared, so it has successfully logged in. Successfully logged in. If it has not, then obviously you have not logged in. ठीक है, okay, confirm. एंड या वी विल बी ऑल्सो रिट्राइंग द इनिट स्टेट एज वेल. इस कंडीशन में मैं यहाँ पे कुछ ट्राई कैश नहीं लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं रिट्राई स्कोप नहीं लगाऊंगा, बिकॉज हमारे रिट्राई स्कोप लगा है ऑटोमेटिकली इनसाइड द इनिट पार्ट. हम उसमें लगाएंगे, विल बी ऑल्सो टेलरिंग दैट कंडीशन ओवर देयर इन द एंड. ठीक है, चलिए, सो ये है जस्ट अ लॉग मैसेज. डबल जी आ गया क्या? ओके, या जस्ट अ लॉग मैसेज गाइज. सो सक्सेसफुली logged in, right? We are successfully logged in. और अगर ऐसा नहीं होता है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, I'll say didn't logged in, okay? And we'll be also displaying this message with a warn करेंगे भाई लॉगिन नहीं हुआ है, and it will be again retrying that specifics क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर आएगी. ठीक है, उसको नहीं मिलेगा UI एलिमेंट वगैरह, तो यहाँ पे एरर आएगी. इट विल बी ऑलरेडी हैंडल इनसाइड द इनिट स्टेट. येस, वी विल बी रिट्राइंग द इनिट स्टेट व्हेन अ सिस्टम एक्सेप्शन occurs in this project only. How cool is this guys? ठीक है, वी विल बी मॉडिफाइंग द RE framework as well, but in the end, not now, in the end. ठीक है, चलिए, ओके, सो लेट्स क्विकली रन इट. एक बार इसको चला के देख लेते हैं हम लोग कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? एंड ऑल्सो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन कार्ड, स्पेसिफिकली यूज एप्लीकेशन कार्ड, जस्ट चेक कि भाई आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं ये क्लोज. यस, यू डोंट हैव टू क्लोज दिस एवर, बिकॉज देखिए अगर आप बार बार इसको क्लोज करते रहेंगे, बार बार ओपन करेंगे, तो यू वोंट बी हैविंग दैट परफेक्ट आउटकम ऑफ द ऑटोमेशन. वो नहीं मिलेगा उसको, राइट? दैट स्पेसिफिक UI एलिमेंट वोंट बी फाउंड ओवर देयर, right? So what we can do, we can say close never, because see, once it's logged in, it will be only and only iterating inside the states. ठीक है, states के बीच में घूमेगा आपका पूरा कार्ड अपने आप. ठीक है, तो you can say input mode, sorry, open is by default always will be open only. ठीक है, चलिए. सो अच्छा, हाँ, एक और चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ. वेन एवर यू आर यूजिंग द न्यू डिज़ाइन ना, तो ऑटोमेटिकली द UI एलिमेंट्स विल बी एडेड टू द ऑब्जेक्ट रेपो नाउ, जैसे इसने यहाँ पे कर दिया है. बट मुझे वो अभी नहीं चाहिए था, तो मैं उसको डिसेबल भी कर सकता हूँ. कैसे करते हैं देखते हैं. तो यू हैव टू गो टू द प्रोजेक्ट, प्रेस दिस व्हील साइन. ठीक है, सेटिंग्स वाला साइन है, उसको आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, एंड यू विल बी गोइंग टू UI ऑटोमेशन मॉडर्न ओवर हेयर लाइक दिस. ठीक है, एट द एंड
नॉट एट द एंड ओवर हेयर यू कैन से ऑटोमेटिकली ऐड यूआई एलिमेंट्स टू ऑब्जेक्ट रेपो, तो यहाँ ट्रू है, मैं ऐसे कर दूंगा फॉल्स, ठीक है, ओके, आई डोंट वांट ऑब्जेक्ट रेपो राइट नाउ, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे. सो आई जस्ट क्विकली डिलीट ऑल दोस. इट हैज बीन सक्सेसफुल डिलीटेड, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी एडेड इन अवर फ्लो राइट नाउ, ठीक है. तो हम लोगों ने गेट क्रेडेंशियल भी ले लिया है यहाँ पे. लेट्स क्विकली सी, सिक्योर स्ट्रिंग इज हेयर एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. आई ऑल्सो सेट टू 140. सॉरी फॉर दैट गाइज, मेरे माइंड में नहीं रहा कि इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहिए for ease of visibility and all, right? I think this is now more fine, right? चलिए, so you can see that let's quickly run it, this library, ठीक है, चलिए. Okay, I think it's using Chromium API, that is why it's pasting all the string in one go. Okay, I think it successfully got it. Output successfully logged in. Okay, no issues. And don't worry about the exceptions, guys. It will be handled inside the REFramework. As I told you, we'll be retrying the init state as well, right? I have already uploaded a video way back. एक दो दिन पहले मैंने डाला है, but we'll be also checking it over here at the end, but not now, at the end. ठीक है, चलिए. So we have made this library. Quickly publish it. Login library. I'll say CSH, client security hash. For the client security hash, we're doing it. Tenant libraries feed, remove unused dependencies. Yes, ठीक है, no issues. अच्छा, एक और चीज़ मुझे इसको रिमूव करना था because I don't need the CRED activity over here, ठीक है, and it is pretty much it, ठीक है. ये लाइब्रेरी है, इसलिए मैं इस पे ये पाथ को ऑब्वियसली इसमें कॉन्सेंट शीट्स है नहीं, ऐसा कुछ सेटिंग कॉन्सेंट एसेट शीट, बट इट विल बी गिवन इनसाइड द कॉन्फिग पार्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ एन एसेट. विल बी स्टोरिंग एवरीथिंग इनसाइड ऑफ एन एसेट गाइस, ठीक है. चलिए, CSH okay, so it has been successfully published. Let's go to our performer, sorry, dispatcher. Let's go over here inside the manage packages, inside the tenant feed. Over here as 2020 112. Okay, install save. Okay, okay, let's quickly see what have we in the activities part. Project, framework, init all applications. I'm just checking, I'm explaining in a second guys. Acme system 1 login. Okay, yeah, so you can see that we have a argument over here in underscore str username and password as well. This will be populated with the help of a credential activity जो कि हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो भाई देखो, जब भी हम आरी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, 40 विल बी फाइन. दिस इज अ 2K रेजोल्यूशन गाइस, तो उसमें बहुत छोटा दिखता है, ठीक है. चलिए, आई थिंक दिस इज नाउ ओके, या ठीक है, ओके. So over here inside the initialization part, we will be pushing our this library for the login purpose. ठीक है, हम login हम कर लेंगे, login करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, but we will be also modifying the config file as well. First, let's quickly go to the config file, guys. Will you find inside where? Inside the data. मैंने सब बता रखा है अपने वीडियोस में. Please watch all those videos, guys. ठीक है, ओके. अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये भी बताया था कि भाई सेटिंग्स में हम क्रेडेंशियल टाइप के एसेट्स में एसेट्स पे हम लोग क्रेडेंशियल टाइप के एसेट को क्यों नहीं रख सकते हैं. इफ़ एनीबडी नोज द आंसर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये आंसर पता है कि वाई वी कांट यूज क्रेडेंशियल टाइप ऑफ एसेट इनसाइड द एसेट शीट इनसाइड द कॉन्फिग पार्ट. ठीक है, वाई वी कांट यूज, लेट्स सी. चलिए, तो ओवर हेयर वी हैव अ फोल्डर दैट इज dev folder, dev, right, DEV, and I'll just say REF CSH dispatcher like this. ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है. दिस इज द क्यू फोल्डर. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम लोगों ने क्यू तो यहाँ पे यूज़ नहीं की है, तो ये मतलब हम यहाँ पे ये क्यों रख रहे हैं इसको. भाई वो वाली क्यू भी तो होगी ना जिसमें ऐड करोगे डेटा, तो वो नेम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है.
ठीक है। तो वट यू कैन डू, यू कैन जस्ट डिलीट इट, बिकॉज ये नेम कुछ और है, वो नेम कुछ और होगा जो मैं लूँगा। ये नेम तब यूज़ होता है जब हम परफॉर्मर के लिए क्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी आर जस्ट हैव टू नाउ इन दिस डिस्पैचर वील हैव टू ऐड सम डेटा इनसाइड द क्यू, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड is it because we're converting config to a dictionary variable or type string object type and type object type? Your answer is okay, no issues, Kiran, no, I don't mind. But the main thing is, see over here, you can see that whenever we are using the credential, it will be giving us two values over here, right? One will be the username, which is a string. The second part will be a secure string, which will be a password. So this asset will be only giving us the specific name of the asset. अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, if I'll be keeping my this credential asset over here, so it will be just giving me the specific name of that asset. ठीक है। तो we'll have to use a get credential type of activity to procure the secure string and the str जो भी आपका string है from the asset over there inside the get credential activity, right? तो your answer is okay, no worries, ठीक है। चलिए ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे ही, एंड लेट्स क्विकली जंप इनटू द ऑर्केस्ट्रेटर गाइस। ओके, सो ओवर हेयर जस्ट टू सेव सम टाइम, मैंने यहाँ पे एक्मे क्रेडेंशियल बना रखे थे, बट आई हैव नॉट मेड द URLs। ओके, नो वरी, अच्छी बात है, हम सामने बना देंगे आपके, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन लाइब्रेरी को पुल कर लिया है यहाँ से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज अ गेट क्रेड टाइप ऑफ एक्टिविटी। देखिए, दिस इज द यूज ऑफ यूजिंग लाइब्रेरीज ओवर हेयर, राइट। आपको वो इतना सब कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है जो मैंने लाइब्रेरी पे किया। वो लाइब्रेरी अपडेट होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका पूरा लॉगिन पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। आई कैन यूज दिस पार्ट एज वेल, बट ड्यू टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस आई एम नॉट यूजिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे डेव है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका नेम ऑफ द क्रेडेंशियल, दैट इज acme_credentials, okay, we just copy and paste it, okay. Yeah, so we can see that the name should be inside the value part only, right? obviously सबको पता है, but just a reminder, ठीक है। acme credential, and इसको हम किसी भी की से कॉल आउट कर सकते हैं। so I'll say acme creds and just say acme login credentials for system 1, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन देना ठीक रहता है यहाँ पे, ताकि पता चले कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर इज डेव, तो ओके, यहाँ पे हमसे मांग रहा है ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ। तो ऑब्वियसली दिस इज माय मॉडर्न फोल्डर ओवर हियर एज डेव। आई विल जस्ट क्विकली एनलार्ज इट, ठीक है। Okay, also Kiran Vector is saying also one thing, please English, explain max in English, can't follow everything is saying Hindi, just a suggestion. Okay Kiran, I'll try to be max in English, okay, speak maximum in English, don't worry about it, okay. Okay, so we have used the get credential activity, okay, but we will be also using this you can say in config part, but we have to use this orchestrator queue folder over here, copy this, right, and over here inside, go over here, open expression editor. I'll just enlarge it in config, and you know that how to iterate inside a dictionary. So I'll just call this name inside of a string. This is as an object, we'll be converting it dot to string, right. So we have used orchestrator queue folder. This will be giving us dev, dev. This will be giving us this value over here, right. So we will be this will be populating dev over here, which we can also do it with the help of a drop down, but due to the best practices we will be using everything inside the config dictionary, right. Okay, credential asset name, again the same part. We have used acme_creds, okay, we'll be using over here like this. I'll enlarge it so that you guys can see clearly, dot to string, okay. So our get credential activity is done. It will be pushing out two specific type of variables, right.
So let's see what are those. Username and password. Username is string, guys. Password is again secure string, and we have just tried and tested inside our library as well. So over here we have this, right? We will be using this part. 1 second. Okay, sorry, they are being converted. They are not been converted now. So it was just a label over here. I thought this is a variable name. Okay, no issues. So I'll give str underscore username. Okay, and password will be sec secure underscore str underscore password. Right, I'll just be populating it over here, str underscore username and sec underscore password. Right, two variables have been automatically created. We will be not hindering with all those scopes over here, right? Okay, so see, you can see the help of library that we have get here. We have just minimized the flow, right? We have how much we have minimized the flow over here. Otherwise we have to create all those application scopes again, check app state activity and all. So we have minimized the flow with the help of a library. So it's better to use libraries if the workflow is reusable, and we'll be also using this library inside the performer part. That will be shown at a later stage, don't worry, and that will be live as well. Every project over here will be live now. Okay, let's go. So we have logged in, right? And let's see what about more thing. Acme underscore creds is here, and I don't think we need anything more for the login part. Let's quickly run it as well and just put a breakpoint over here for the feasibility. Okay, and okay, main, everything looks good. Quickly close it. Cred is there. Okay, let's try to run it. I will close this part. We have to also create a logout as well. We'll be creating in the end. Step by step we'll be going. Okay, let's go. So let's quickly debug it. Okay, so over here I'll just say str underscore username is my mail ID, and that will be a secure string, right? SEC. So it's length of 12 that you can't see. Okay. Okay, no issues. So we can see that. Let's quickly press continue. Okay, password. Have you done it? Please fill out this field. It is not working. Let's see. Could not retrieve, didn't logged in. Okay, could not retrieve transaction item exception message given was not. Okay, the given orchestrator queue name was not present in the dictionary. Okay, no worries. 1 second. Okay, let's go over here inside the project part. Orchestrator queue name was not present inside the dictionary. Consents is there. Orchestrator queue folder we have quickly deleted. Orchestrator queue name we have removed. Okay, so let's quickly keep it over here as well. Quickly create a queue, guys. Assets. See, this is the performer queue, right? This is not the dispatcher queue, because dispatcher will be extracting all those data with the help of a data table, right over here. Queue and name will be CSH performer queue. And guys, we'll be also checking out the unique references. I'll let you know in the end why. Okay, CSH performer queue. I'll copy this part and add it over here. Okay, and let's go over there inside of it again and just say CSH performer queue. Right, I hope this will be orchestrator queue name. Okay, no issues. It should be over here. Okay, no issues. I'll just quickly close this and let's see it again. Retry.
This error was being because I was had open, the Excel file, it was open, that's why I need to close it, and I pressed the try over here. Let's see, step into this part is not executing, password is not executing. I don't know why. We have already providing it over here. Let's see, let's quickly see our library. It is there. Okay, let's see the library as well. It's not populating the values inside the password. Let's see, guys. In underscore sec str password. Okay, this is being populated. Okay, this has not been let's see, target, it is being able to identify that we know as in underscore str. This is in. Okay, password is there as well, secure is there. Okay, either we have to change our library, maybe. Let's see, inside the init part, init all applications. Okay, over there do all the property inside of it as well. sec str flow. Let's try to run it again. Close this and we'll see sec str password is this part. It should be giving us this value, sec underscore str password. Okay, and str username is this. Okay, it is not pushing the value over here, right? Let's see. Please fill out this field. It is not pushing the value over here inside the password, but inside the library it is doing it. Didn't logged in. Okay, let's quickly check the library over here. And underscore scr underscore password, get credentials, dev, acme credentials is there, and we have to use n scr username, but this we have already tested, right? Password. Okay, secure is here. Okay, it should not. Okay, this should run. It is pushing it. Maybe we have to check the get credential activity once. Let's see. Inside the project, we'll be going inside the framework, init all applications. Okay, acme creds. Okay, this is the same this part, right? The credentials will be the same. Okay, assets, acme credentials. Okay, having the same creds. Okay, you can't see this. My credentials, project, data, config. Acme credentials is this. Acme creds, we are calling this acme creds. That's why we're getting this name. Performer queue. Okay. Orchestrator queue folder. Acme cache is the same part. Okay. Maybe because of the string, it's not taking. No, it should take this, right? str underscore username is here, password is here as well. It should be pushing it. Let's try to bifurcate it. 1 second. Okay, so we have str underscore password,
will be system dot and it was 1 second. It should be giving us the password over there. It's not populating it. That is the only issue over here. What we can do in this scenario, we can just use a application over here and just we'll be dealing with this later, no worry guys. Okay, so let's log it out and quickly log it in again. Inside this project, settings, automation modern, false. Okay, so as I told you that it is already adding the all those UI elements over here inside the object repo. In this case we are not using the object repo guys, right? So we will be using the classic way to do it. We'll have to make an R&D on this and why the library was not working. Password. Okay, and click. Right. Okay, so over here this part will be str underscore username sec underscore str password, click, and again I'll be using a check app set activity to just check that whether it is working or not. gmail.com. So it is just same steps that I have done on the library part guys. Library was not able to populate that password field, right, that we can see later, no worries. Log message, right, logged in, and a same log message over here. It was didn't logged in. Okay, with the one level over here. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है पूरा. लेट्स क्विकली रन दिस पार्ट एज वेल. इसको मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ अभी इनसाइड द टेक्स्ट एसेट इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर. ठीक है, लेट्स क्विकली पुट द डीबग ओवर हियर and log it out. Okay, and now quickly run it. Let's see. Maybe that due to string or secure string conversion there was some issue with that specific library that we have to see. Okay, it didn't logged in. Why? 1 second. Init all application, this went run. Dashboard was not found. Okay, let's quickly say to 7 seconds. Let's say properties to close never, and let's try to run it again. Continue. Okay, okay, so output was successfully logged in. Okay, that is no issue there because we didn't have any queue to populate the data, right? Okay guys, I don't know, due to some reason this was not able to populate the specific password field, right, that I have to R&D on it, right? No issues. So I am commenting it out, right? In the next live I'll be using the library only, don't worry, right? Okay, so we have completed our this part. You can say init all applications part we have already done it because we need to only log in this you can say XAML, right? We need to log in this XAML, and what we can do, we can use this and say as extract as a workflow, right? And I'll say CSH
ref csh, and I'll say login, right? Create. Okay, so one second, csh login. I don't want to save the file. Okay, no issues, that is working fine. अच्छा, ये मैंने ऐसे कर दिया, right? Okay, so what I can do, I can just use that specific okay, and this was it. All those initialize, this part will be done, and let's see, extract as a workflow. I'll just copy this first, copy this and paste it over here. Design save over there, project, init all applications. I'll just delete this and delete this as well. Just okay, yeah, now it's working, no issues. ठीक है, तो I hope that this part is very clear, that how we have initialized or how we are logged in inside the Acme system 1, right? We were using a library, but due to some reason we were not able to populate the specific password field, so we have used the classic way to do it, that is just create a new XAML and invoke it inside of init all applications workflow. Okay, no issues. So str underscore username will be given by this, okay, this will be transferring it over here, over there, and let's see, arguments will be in. So as you know that whenever we are invoking, extracting any workflow as XAML as a workflow, so all those variables will be converted into arguments. So I'm just saying that in, now it is an input argument now, okay, in underscore sec underscore str, save it, right? Okay, so this is now totally working. And yeah, about this part, let's see, copy this inside the orchestrator. Let's create a new asset, rpa url, rpa change, I don't have it right now. Okay, the type will be text, guys. हम यहाँ पे text type create कर रहे हैं, asset, ठीक है? Text will be this. Now we have to remove the underscore over here, right? Okay, and I'll say Acme login URL. Okay, this is the Acme login URL type of, I can say text as an asset of type text. I'll just create it, right, and I'll just paste it over there inside my config dictionary. Okay, now this I can paste inside the asset sheet, guys. We don't have any compulsion to paste inside the setting sheet. We can paste it inside the asset sheet, and यहाँ पे we don't have to, over here we don't have to leave any spaces, because we don't have a condition inside of asset sheet to check for any spaces, so it will be giving an error. Okay, asset name is this, you can URL Acme login URL. Okay, asset folder is dev, and I can say that login URL of the Acme system 1. That's it, simple. Save it. Let's call it over here, init all applications. Let's quickly say that open workflow over here. I'll create an argument now. Okay, in underscore acme underscore login URL. Okay, I'll save it. Always save your workflow whenever you're creating arguments, guys, because it will not be showing inside the invoke workflow. Then you'll be creating an argument inside the invoke workflow. That is not feasible. Okay, init all applications, refresh it. You can see now it is 3 arguments instead of 2 over here, and you just have to say in config. See, everything it is inside the config dictionary now, so you have to call each and every key to get the specific values, right? What was the key over here? The key was login URL, like this. Okay, and I'll just say inside the quotes dot to string. Okay,
and this will be as it is, str username and sec str password. That was system.security dot आपका secure string, right? Okay, so let's save it, and we have this. Nothing is being shown over here. Like this, we are using always with the best practices only. Okay, we are also seeing that over here. You can see that I have pressed shift F2 for this, guys. You can say that logging inside the Acme system 1. That's it. Logging inside the Acme system 1. Over here you can say checking whether the dashboard is visible or not, right? Okay, so we have also used the validation over here, and as I've already told, guys, don't worry, we'll be checking inside the init state that if an error is coming over here, it will be always retrying the transaction, right? The specific transaction it will be retrying, okay, inside the init state only. If the system exception will be coming over here, it will be retrying the specific state. Will be formulating the flow afterwards, right? Not now, afterwards. Okay, so this is done. Okay, so we have successfully logged in inside of Acme. Now I'll do it manually as well. We have already done it. Okay, so now what was the next step? Let's see the PDD. Inside the PDD, we are having access the dashboard center location where the user can pick a specific menu item. This part we have done. So till 1.3 we have successfully done it. Now let's try to do 1.4. Access the work item listing to view all the available tasks to be performed. Output data work items means we have to access the work items now. So guys, for this I am planning to use a reusable workflow over here. Let's see how. Let's see. Go inside our this part. So over there you can see that whenever we are clicking on the work items, that URL is changing over here. It was home, but it is now work items over here. So the URL is changing, or you can say that I need to create a workflow like this in which I can, for example, I am here, search for invoice. I'm in this tab. I need to directly go to the work items. I need to directly open work items. What I can do, I can click on home, then I can click on work item. This is a tedious process, right? Every time I need to do that. So what I can do, I can use a URL to directly go to the work items page so that I can access these work items and continue with the downstream process over there, right? So then let's formulate this. Let's quickly copy this URL over here. Okay. What's the need of creating argument for asset? What is the need of creating argument for asset? Snigdha is asking. So Snigdha, see, whenever we are using a library over here, you can see that we have used the library, this part. I'll show you again. We have used the library, but this is for the test part only, but we were not using the get credential activity over there inside the workflow, right? So what we have done, we have used an argument so that this part will be populated with the help of a variable over here, which will be giving the get credential activity. Output of the get credential activity will be populated over here. So wherever we are using any you can say argument for an asset, so you can say that, I'll just show you, 1 second, let it load. So you can say that over here inside the framework, in it all applications, yeah, so you can say that, see, it will be giving us the option to put a custom value over here, and this credential was pushing the value over here of the output of this credential string and secure string, that is the username and the password. So it was giving this type of you can say architecture of this specific activity, right? This is a library, don't worry, this is a library only. We have just minimized the flow, but due to some reason it was not able to populate the password field, that I'll have to R&D on this, right? We'll not be wasting time on this live sessions. Okay, I hope that will be catering your question, Singha. Okay, let's move ahead, guys. Chali. So login URL has already been done, and where was us over there? Okay, so this is part done. Okay, so now we have to create another sequence, ref scsh, and I'll just simply go to navigate to work item. Now this
sequence has the sole purpose to just navigate to the work items, because we can use this specific sequence inside performer as well, or inside dispatcher as well. Over here as well we can use it multiple times. Whenever we need to transition into work items again, we can use it. So, okay, let's do it. So let's use application or browser. Okay, I'll be indicating this part. I'll be indicating this one because from here only we have to go, right? Okay, .com, and over here I'll be using go to URL, right? So over here we can just push the URL like this. This is for the testing purpose only. I'll be keeping that inside the config file, don't worry. Understood. Thank you so much, Snigdha. Thank you so much. Okay, सो लेट्स क्विकली टेस्ट इट गाइस. ऑलवेज टेस्ट योर वर्क फ्लोस. ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं एंड वी आर ओवर हेयर इन दिस पार्ट. वी नीड टू गो टू वर्क आइटम्स. ओके, लेट्स टेस्ट इट. Did we went to work items? Yes, we went to work items. Now let's test it another scenario. Okay, we are inside the search for vendors, and is it directly going to the work items or not, or do we have to change its selector? Let's test it. Okay, I didn't did this. Close never and open never as well, right? So now vendors, and let's see. No, so you can see that it is not going inside of this flow. Why? Because we have not made it dynamic. This is not a dynamic flow, guys. It's just a static flow that जब भी मेरा dashboard पे होगा, whenever it is inside the dashboard, it will be directly going to the work item. But we have to make it like from any tab it can go to the work item. So this is not done. Why it is not done? I'll let you know. See, over here if you can see the URL of this part, this is acme-test.uipath.com / but you can see that this was expected because it couldn't find the UI element. So what we can do in this scenario, I'll let you know what we can do. You can quickly see its selector over here inside the properties. You can go to unified target, application target. I'll first zoom it. Okay, and I'll go over here inside its properties like this and keep the selector. You can see it is coming as dashboard. It is coming as dashboard over here, right? But it is but is it dashboard? No, it is vendors search, vendors hyphen search. So we need to make it dynamic, right? We need to make it dynamic. That's why. So let's quickly go over there and put a wildcard over here, guys. If you don't know wildcard, guys, it will be replacing, like we are just focusing on Acme system 1. After that whatever comes, it none of us our concern, right? It is not our concern. Okay, like that. So validate it as well. Always validate your flow, guys, whenever you are working with selectors. Okay, right. So now let's see. I think we have to use a asterisk over here as well, but let's see. Over here we need to go to the work items. It is working. Okay, it is working because we have changed the selector inside of this unified target application over here. You can see, right? Okay, so we are inside the work items now. This is done. So let's quickly follow the best practices, and this is done because see, we have already used it. Login URL is there. No, I think 1 second. This is different, right? This is different. And the login URL was different. Yeah, .uipath.com .login was there. Okay, no issues. So I'll create another asset, then I'll say acme _dashboard URL, and I'll just paste this specific URL, but I'll be removing the work items like this. Okay, because this is the dashboard URL. We have to go to the work items URL. We'll be also creating an asset for the work items URL. Don't worry, guys. Create. ठीक है, इसको हम select करते हैं and I'll be putting it over here. Okay, I'll say to D and over here acme dashboard URL.
Okay, all the type of text assets you can keep it inside the asset sheet, except for the credentials. All the assets you can keep it inside of the asset sheet. सिर्फ आपको credential वाले कोई settings में डालना पड़ता है, ठीक है. Okay, this is done, and I'll also create as Acme work items URL. Okay, and you can give the name as same name over here like this. We are creating the asset, don't worry. And I'll say dashboard URL for Acme work items URL for Acme. This is just a description to know that if anyone else is working on a project, he or she should be knowing that all those assets description, that what this asset is doing, right? What this asset is containing, like that. Okay. So save, and let's quickly copy this. And I'll create an asset again. This will be it. And over here, I'll copy this part, this work items part, and paste it without the inverted commas. Okay, let's create it. Okay, so we have created dashboard URL, we have created login URL, that was a login part, and then we have created work items URL. Okay, so this will be going over here. This is the work items URL, guys, and dashboard is the main page, and login was the one which was created at the start, in which we are logging it in, right? Okay, so now let's go to the studio again. Let's quickly create an arguments in Acme dashboard URL. Okay, obviously it'll type of string only, in underscore Acme work items URL. Okay, type string again, guys. So over here I'll say in underscore work items URL, and over here I'll say in underscore dashboard URL, like this. So this is working totally fine. Let's quickly check it again. Open is never, close is never. Why? Because it has been already opened from the login sequence, and we don't want to open it again and again, and obviously we don't want to close it, because if we'll be closing it, so how we'll be working on it? Okay, this is a pretty obvious question, guys. So we have created two XAMLs, CSH underscore login, right? And this is navigate to work items. This is a reusable workflow which you can call inside of any XAMLs or inside of any states, right? So this is a login workflow, this is navigate to work items workflow. Okay, so now let's quickly go over init applications and project. I'll say navigate to work items over here like this, right? So it is also expecting some data. Let's give this data to it. In dashboard URL, I guess it's the same name till Acme, so I'll put it inside the quotes like this, to string, because it is an object type, we're converting it to dot to string, and config again over here as Acme URL like this. Okay, dot to string. Okay, so we have given the arguments, the variables, values, everything, and we are using this navigate to work items inside the you can say init all application, because we need to go inside the work items only once. We will be creating the we will be extracting the data table from it and pushing the data table inside the queue, right? We can also use bulk add items to the queue, or add queue items. In this case we'll be using add queue items. Okay, so guys, I think this is a 1 hour video. It's more than 1 hour. So in this case, we'll be bifurcating this live session into parts, so that you don't get bored as well, and आपको देखने में easiness. You should be feeling easy while seeing all those videos or all those live videos. Okay, so till then I'll just give you a high level that what we have done in this live video. Okay, we have created a login sequence. Okay, and we have created a navigate to work item sequence. We have and made you understood the high level design of the workflow. Okay, that what was the workflow doing and all everything. So you can say that we will be continuing this live session inside the next live.
maybe it can be today as well, because I'm very excited to showcase this project live to you guys. Okay, very very excited, and a lot of good things are coming ahead in my channel as well, inside this project as well. New ways of doing project are coming, because we have now the autopilot inside the public preview as well, so we'll be using that as much as possible inside our projects as well. We'll be also using the healing agent inside our projects as well. Okay, so please wait and watch, guys. This is going to be a very good journey with you guys. Okay, chali. So with this, let's quickly close the video, guys. Okay, let's quickly close the video, and I hope that you guys have understood the concept of the high level design of client security hash. We have done the login and we have done the navigate to work item sequence. I don't want to make it a very long video because it's more than 1 hour, right? I hope that is pretty much understood. थैंक यू जय, कीप इट अप. थैंक यू सो मच स्नेकदा. थैंक यू ऑल जो यहाँ पे आज आए. थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी आज यहाँ पे आए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज रियली रियली this was my first live, okay, and you guys all showed up, so thank you so much for being here for me. Chaliye, with this, let's quickly close the live stream. I hope you liked the live stream. Any doubts you have, please ask in the comments or in the next live stream. I'll be sending you the post in the LinkedIn that when the next live stream is going to be. Okay, thank you so much guys. Keep learning and keep supporting.